Dear students, welcome to my channel. पिलामाने आज भिडियो रे आमे दशम श्रेणी बीजगणित बही शेष नंबर प्रश्न समाधान करिबा जहा कि क्वेश्चन नंबर 9 हमको दत्त अछि इंस्ट्रक्शन के रो केउ मूल्य पई निम्न रे दत्त सह समीकरण दे असंगत हेबे। सह समीकरण दुईटी रहिछि 8x + 5y - 9 = 0 एवं kx + 10y - 15 = 0। तेणु प्रथमे आमे कंडीशन देखिबा सह समीकरण द्वारा केतेबेले असंगत हेबे। सो जेतेबेले a1 / a2 = b1 / b2 ≠ c1 / c2 हेबो सेतिकि बेले सह समीकरण द्वय असंगत हेबे एवं आमे k रो मूल्य निर्णय करि परिबा। तेणु प्रथमे दत्त सह समीकरण द्वय को उल्लेख करिबा। दत्त सह समीकरण द्वय 8x plus 5y minus 9 is equal to 0, which is first equation, and then kx plus 10y minus 15 is equal to 0, which is second equation. एठारे प्रथमे आमे कोन करिबा a1 एवं a2 रो मूल्य निर्णय करिया। a1 is 8 and a2 is equal to k. b1 is equal to 5 and b2 is equal to 10. c1 is equal to -9 and c2 is equal to -15. सह समीकरण दे असंगत हेबे। तेणु दत्त अछि सह समीकरण दे असंगत। अतएव a1 by a2 is equal to b1 by b2 and which is not equal to c1 by c2. That's implied बर्तमान हमें a1 एवं a2 रो मूल्य स्थापन करिबा। So 8 by k which is equal to 5 by 10 and which is not equal to c1 by c2, that is -9 by -15. जेहेतु आमर k रो मूल्य निर्णय करिवार अछि प्रथम समानतारु आमे k रो मूल्य निर्णय करि परिबा। तेणु प्रथम समानतारु आमे पाइबा k * 5 is 5k, which is equal to 8 * 10 is 80, and then k is equal to 80 divided by 5, which is equal to 16. ताला हम कोन लिखबा एटा therefore बातेव k रो मूल्य से पचार जे हमकु k रो केउ मूल्य पई। तेणु k रो मूल्य 16 पई सह समीकरण द्वय असंगत हेबे। जदि k रो मूल्य 16 हैला तबे सह समीकरण द्वय असंगत हेबे। व्हिच इज आवर आंसर। वर्तमान पिला माने हमें 9 नंबर रो बिट 2 को जिबा। आमान पई सह समीकरण द्वय दत्त अछि kx - 5y - 2 is equal to 0 एवं 6x + 2y - 7 is equal to 0। तेणु एही सह समीकरण द्वय रु हमें a1 a2 b1 b2 एवं c1 c2 निर्णय करी k रो मूल्य बाहर करिबा को हेबो। तेणु प्रथमे सह समीकरण द्वय को हमें लिखिबा। सह समीकरण द्वय kx - 5y - 2 is equal to 0, which is first equation, and then 6x + 2y - 7 is equal to 0, which is second equation. तेणु पूर्व परि हम निर्णय करिबा। एठारे a1 is equal to k, a2 is equal to 6, b1 is equal to -5 and b2 is equal to 2. सही परि c1 is equal to -2 ध्रुवक राशि प्रथम समीकरण रो एवं c2 is equal to -7 जहा कि द्वितीय सह समीकरण रो ध्रुवक राशि अटे। सह समीकरण द्वय रो हमकु दत्त अछि
सह समीकरण द्वयर सह समीकरण द्वय असंगत हेबे तेणु सह समीकरण द्वय असंगत हेतु a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। बर्तमान आम कौन करिया पिला माने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 रो मूल्य स्थापन करिया। So that's implied a1 by a2 is k by 6 which is equal to b1 by b2 minus 5 by 2 and that is not equal to c1 by c2 minus 2 divided by minus 7। तेणु प्रथम समानतारू आम k रो मूल्य निर्णय कर परिबा। That's implied k into 2 which is 2k and that is equal to 6 into 5 is 30 and plus into minus is sin minus which implied k is equal to minus 30 divided by 2 which is equal to minus 15। Therefore k रो मूल्य minus 15 हेले सह समीकरण द्वय जो सह समीकरण द्वय हमको दत्त अछि असंगत हेबे। k रो मूल्य minus 15 हेले एही दत्त सह समीकरण द्वय असंगत हेबे। पिला माने वर्तमान आमे 9 नंबर ट्रिपल आई बिट को जिबा हमको सह समीकरण द्वय दत्त अछि जहा लिखिबा सह समीकरण द्वय kx plus 2y minus 3 is equal to 0 which is first equation and then 5x plus 5y minus 7 is equal to 0 which is second equation। एठारे a1 एवं a2 रो मूल्य निर्णय करिया प्रथमे a1 is equal to k a2 is equal to 5 then b1 and b1 is equal to 2 and b2 is equal to 5 then c1 is equal to minus 3 and c2 is equal to minus 7। जेहेतु सह समीकरण द्वय असंगत हमर दत्त अछि सह समीकरण द्वय असंगत तेणु असंगत हेले शर्त कोन पिला माने जानिछ a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is not equal to c1 by c2। That's implied a1 by a2 is k by 5 which is equal to b1 by b2 that is 2 by 5 and which is not equal to c1 by c2 that is minus 3 by minus 7। बर्तमान प्रथम समानतारू आमे k रो मूल्य स्थिर करि परिबा। So k into 5 is 5k which is equal to 5 into 2 is 10। That's implied k is equal to 10 by 5 5 रो पार्श्व परिवर्तन कले which is equal to 2। अतएव k रो मूल्य 2 पाई सह समीकरण द्वयर सह समीकरण द्वय असंगत हेबे। k रो मूल्य 2 हेले दत्त सह समीकरण द्वय असंगत हेबे। वर्तमान पिला माने हमें 9 नंबर रो बीट आईबी को जिबा प्रश्न अछि kx - y - 2 is equal to 0 एवं 6x - 2y - 3 is equal to 0 यही सह समीकरण द्वयर यही सह समीकरण द्वय असंगत हेले k रो मान केते अर्थात k रो केउ मान पई ए सह समीकरण द्वय असंगत हेबे। वर्तमान हमें समाधान में प्रथम सह समीकरण द्वय को लिखिबा सह समीकरण द्वय kx minus y minus 2 is equal to 0 which is first equation and then 6x minus 2y minus 3 is equal to 0 which is second equation। एठारे a1 is equal to k a2 is equal to 6 then b1 is equal to minus 1
B2 is equal to -2 and C1 is equal to -2, C2 is equal to -3. दत्त अछि सह समीकरण द्वय असंगत। अतएव A1 by A2 is equal to B1 by B2 which is equal to C1 by C2 which is not equal to C1 by C2 कारण सह समीकरण द्वय असंगत। That's imply K by 6 A1 by A2 so K by 6 which is equal to B1 by B2 that is -1 by -2 and which is not equal to C1 by C2 which is -2 divided by -3. बर्तमान प्रथम समानतारू आम k रो मूल्य निर्णय करिबा k into -2 which is -2k and that is equal to 6 into -1 is -6. That's imply उभय पार्श्व बर्तमान आम माइनस को अपसारण करि परिबा so 2k is equal to 6 and that's implied k is equal to 6 by 2 which is equal to 3. So therefore k रो मूल्य 3 पई सह समीकरण द्वय असंगत हेबे। जदि k रो मूल्य 3 हुए तेबे सह समीकरण द्वय असंगत हेबे। वर्तमान पिला माने हमें 9 नंबर बिट b को जिबा सह समीकरण द्वय तम मान पई दत्त अछि x plus 2y minus 5 is equal to 0 एवं 8x plus ky minus 10 is equal to 0 यही सह समीकरण द्वय असंगत हेले k रो मूल्य हमें स्थिर करबा। तेनु प्रथमे सह समीकरण द्वय को उल्लेख करबा दत्त सह समीकरण द्वय x plus 2y minus 5 is equal to 0 which is equation 1 and then 8x plus ky minus 10 is equal to 0 which is second equation. एठारे लक्ष्य कर पिला माने a1 is equal to 1 a2 is equal to 8 b1 is equal to 2 and b2 is equal to k. सही परी c1 is equal to -5 and c2 is equal to -10. जेहेतु सह समीकरण द्वय असंगत अतएव a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is not equal to c1 by c2. वर्तमान मूल्य हमें स्थापन करिबा a1 by a2 1 by 8 is equal to b1 by b2 that is 2 by k and which is not equal to c1 by c2 अर्थात -5 by -10. प्रथम समानतारू आमे k रो मूल्य निर्णय करिबा so 1 by 8 is equal to 2 by k and that's implied k into 1 is equal to 8 into 2 16. तेणु अतएव k रो मूल्य 16 पई सह समीकरण द्वयर सह समीकरण द्वय असंगत है। एठार आमे k रो मूल्य 16 पाइले। वर्तमान पिला माने हमें 9 नंबर लास्ट बिट को जिबा बा एक्सरसाइज 1a रो शेष बिट को जिबा प्रथमे सह समीकरण द्वय को उल्लेख करिबा। हमको दत्त थिबा सह समीकरण द्वय 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 which is equation 1 and then kx plus 3y minus 5 is equal to 0 is second equation. एठार हमें a1 a2 रो मूल्य प्रथम स्थिर करिबा a1 is equal to 3
A2 is equal to K, B1 is equal to -4, B2 is equal to 3, C1 is equal to 7 and C2 is equal to -5. जेहेतु सह समीकरण द्वय असंगत जेहेतु सह समीकरण द्वय असंगत तेणु एठारे A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2 हेबो शर्त अनुसार तेणु वर्तमान आम मूल्य स्थापन करवा A1 by A2 so 3 by K is equal to B1 by B2 that is -4 by 3 and which is not equal to C1 by C2 that is 7 by -5. प्रथम समानतार पिला माने हम वर्तमान K रो मूल्य निर्णय करवा so 3 by K is equal to -4 by 3 and that's implied K into -4 is -4K which is equal to 3 into 3 is 9. That's implied K is equal to -9 by 4 is 9 by -4 which is -9 by 4. अतएव K रो मूल्य -9 by 4 पाई सह समीकरण द्वयर सह समीकरण द्वय असंगत हेबे एही सह समीकरण द्वय निमंते K रो मूल्य जदि -9 by 4 हुए तेबे सह समीकरण द्वय निश्चित भाव में असंगत हेबे।